Friends, in this video I have discussed anti-abhyas test number 70 math section, and as always I have taken complete paper, that is from question 1 to question 25. So let's see the analysis of the paper. So today's paper will fall in the category of moderate to difficult. Rather it is a difficult paper because of the calculations involved. So I found only 4 questions out of 25 which were easy, and 5 to 6 questions were difficult, and rest all questions were of moderate level, and but yes, they were very calculative. So let's take our question number 1. So question number 1, we have to calculate the term which is independent of x. We can solve it. 1 minus x square, we can take x out, x square plus 1 to the power of 10 divided by x to the power of 10. इसे मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, सॉरी इस पे पावर आउटसाइड है, नॉट हियर. So it becomes 1 plus x square minus 2x into x square plus 1 to the power of 10 upon x to the power of 10, which becomes x square plus 1 to the power of 10 upon x to the power of 10 plus x square into x square plus 1 to the power of 10 upon x to the power of 10 and minus 2x upon x to the power of 10. इससे बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर ऑफ 10 अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ 10 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल 10 अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ 8 माइनस 2 एक्स टू द पावर ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाय, तो वी कैन सी दैट एक्स यहाँ एक्स का पावर 2 है और हियर एक्स का पावर 10 है, तो इस पर फिफ्थ पावर आएगा. देन दिस बोथ term will be cancelled, that is x to the power 10 will be cancelled, and so इसका fifth term जो होगा that will be, I'm sorry, that sixth term, that is 10c5. 10c fifth term 10c5 will be independent of x. Similarly इसमें x स्क्वायर पे पावर 4 आएगा तो ये x to the power of 8 से कैंसिल हो जाएगा. so fifth term that is 10c5 it will be 10c4. now minus इसमें देखें तो x पर पावर इवन है एंड वी हैव टू कैंसिल x टू द पावर ऑफ 9, तो इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करें ऑन एनी रैशनल पावर कैन नॉट मेक इट x टू द पावर ऑफ 9, so here it is not possible. this is like NCR plus NCR minus 1, that is n plus 1 CR, so it is 10 plus 1 CR, so it is 11C5. this is the correct answer of this solution, this problem. Question number 2. A box contains 2 white, 3 black and 4 red balls. So it is 2 white, 3 black and 4 red balls, and we have to find the number of ways of selecting 3 balls is that the box with from the box with at least 1 black ball. Okay, at least 1 black ball. So we can solve it in a way that पहले any 3 ball select करने का number of ways क्या हो जाएगा, that will be, this is total is 3 to 5 plus 4 9, so 9c3 selecting any 3 ball, selecting any 3 balls. now selecting non black balls, that is except black balls we can select any 3 balls. so except black ball there are 6 balls, so 6c3 selecting any 3 except black. therefore number of ways of selecting at least 1 black is simply their difference, and 9c3 minus 6c3. so this is our answer. we can solve it. 9 8 7 upon 6 minus 6 5 4 upon 6, so this becomes 6 12 times, and 12 7 84 minus this becomes 20, so our answer is 64. Question number 3, we have to find the area. Function is y equal to mod ln x. so what is the graph of mod of ln of x? so this is normally ln x, so what will be mod of ln of x? This will be
simply like this. This point is E, comma 0. So we have to find the area from x equal to E to x equal to pi. We know that pi is equal to 3.14 and E is equal to 2.18 something. So let's say it is pi, तो we are required to find this area. इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा y इक्वल टू ln x. So area will be equal to integration ln x dx from e to pi, and ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ln x minus x from pi to e. So this is pi ln x ln pi minus pi, and e term तो e 0 हो जाएगा. So this is our answer to question number 3. Next is question number 4. So it is given if cos x equal to 10y, cos y equal to 10z, and cos z equal to 10x, then sin x equal to 2 sin theta. So what is theta? And given x, y, z and theta are acute angles. So I would say that this is a good problem or very tricky problem. So let's begin with cos x equal to 10y. So cos x is equal to 10y. We can say cos square x equal to 10 square y. Let's add 1 on both sides. It is 1 plus cos square x is equal to 1 plus 10 square y, that will be 6 square y. Now it is given that cos y equal to 10z, so it will be 1 by 10z का square, that is what, cot of cot square z, which is 1 plus cos square x equal to cot square z. Cot square z can be written as cos square z upon sin square z. Now we can write sin square z as cos square z upon sin square z को लिख सकता हूँ 1 minus cos square z. Okay. Now इसमें मैंने sin square x से sin square z से, okay, also we can do that cos z वहाँ पर दिया हुआ है, that is 10x. Cos z is 10x, so we can write 10 square x upon 1 minus 10 square x. This is 1 plus cos square x. तो ये क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स को मैं ब्रेक कर दिया साइन स्क्वायर एक्स, सो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया कॉस स्क्वायर एक्स का. दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंड इन द RHS साइड 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. नाउ वी जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हियर. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आ जाएगा, इट विल बी 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स. सो दिस बिकम्स 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स and minus of minus plus 2 sine to the power of 4x, which is equal to sine square x. Now this becomes 2 minus 6 sine square x plus 2 sine to the power of 4x equal to 0. So minus 2 से minus 2 कॉमन लेने पर ये बन जाएगा साइन, और सॉरी टेकिंग ओनली 2 एज कॉमन, तो साइन 4x माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. लेट्स से दिस इज t, तो ये बन गया साइन स्क्वायर t इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स मान लो, तो t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1, इट इज़ लाइक दैट. तो t क्या आ जाएगा, 3 प्लस माइनस √5/2. सिंस एंगल्स आर एक्यूट एंगल, सो देयरफॉर साइन स्क्वायर एक्स जो होगा दैट विल बिलोंग टू 0 to 1. एंगल एक्यूट है, सो इट विल बिलोंग टू 0 से 1, एंड सो साइन स्क्वायर एक्स बिकम्स 3 प्लस पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव वैल्यू आएगा क्योंकि 1 से छोटा होना चाहिए, 3 माइनस √5/2, और वी कैन से साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस √5
बाई 2, इसे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 6 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4, and it can be written as 1 plus 5, so it becomes रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 उसका होल स्क्वायर और बाई 2 उसका होल स्क्वायर, इसके साथ में अंडर रूट है, so this get becomes root 5 minus 1 upon 2. This is sin x. Now sin x is given to be 2 sin theta, so sin theta is root 5 minus 1 upon 4. Now it is, I think, known to everyone, therefore theta is 18 degree. So it's really it's very calculative. I would suggest you to skip if you are not good at trigonometry. Next, see question number 5. So here a function, differentiable function, it is given by fx plus y is equal to fx into fy, and it is differentiable for all x and y. Now it is also given that f5 is equal to 12 and f dash 0 is equal to 16. Then we have to find f dash 5. So what will be f dash 5? F dash 5 is limit x tends to 0 f, or simply like h tends to 0. So f5 plus h minus 5 f5 upon h, यही होता है f dash 5, तो which is limit h tends to 0. We can write, इसे मैं 5 plus 0 लिख सकता हूँ, f5 plus h, तो this becomes f5 into fh by this rule, माइनस इसे लिख सकता हूँ f5 into f0 upon h. So this becomes limit h tends to 0, f5 taken common, and this becomes fh minus f0 upon h. So this is limit f5 is given to be 12, so 12 taken out, limit h tends to 0, इसे we can write fh plus 0 minus f0 upon h. Now this is what? This is f dash 0, so 12 into f dash 0, and what is f dash 0? It is given to be 16, 12 into 16, so answer comes out to be 27192. So 192 is the correct answer. So question number 6 is there. So a function fx is given tan inverse 2x upon under root 3 into 1 plus x square. So this function is defined from R to B. So R to B, so we have to find the set B for which the function is 1, 1 and R2. So for this question, let's say this is y. So let's say y is equal to 2x upon under root 3 into 1 plus x square. So take square on both sides. So the function is root 3, it is root 3, not whole under root, so it becomes y root 3 plus y root 3 x square equal to 2x. So we can rearrange and write x square into, or root 3y into x square minus 2x plus y root 3 is equal to 0, so it's quadratic in x, so its d should be greater than equal to 0. D is 4 b square minus 4ac, that should be greater than equal to 4ac, that is 4 into y root 3 into root 3y, so 4 by 12 should be greater than equal to y square, or we can say that implies y should belong to minus 1 by root 3 to 1 by root 3 in this range. And y क्या माना है? Y is 2x upon root 3 into 1 plus x square. This should lie between 1 by root 3 से minus 1 by root 3. So this is basically our tan inverse of, तो इसका जो tan inverse लूँगा that will be tan inverse minus 1 upon root 3 tan inverse 2x upon root 3 1 plus x square. This function should lie between tan inverse minus 1 by root 3 से tan inverse 1 by root 3. Tan inverse minus 1 by root 3 is nothing but minus pi by 6, and this is our fx, and this is pi by 6.
सो एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू है -π/6 एंड एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू है π/6 फॉर 1 एंड ऑन टू के लिए बेसिकली कंडीशन क्या है, द को डोमेन एंड द बी सेट दैट शुड बी सेम, को डोमेन एंड रेंज इसका सेम होना चाहिए. सो एफ एक्स शुड बिलोंग टू -π/6. देयरफॉर सेट बी is what, -π/6 से π/6 and it is a closed bracket. Question number 7. So we have to find the mean deviation of this series. तो mean deviation के लिए पहले मैं let's say mean कैलकुलेट करूँगा. x बार number of terms is it is 2n, यहाँ से 1 से 2n, so यहाँ से स्टार्ट होगा, that will be 2n plus 1, number of terms will be 2n plus 1. So x bar is equal to summation of this, that is a square first term plus last term multiplied by number of terms 2n plus 1 by 2 and divided by 2n plus 1. So this comes out to be 2n plus 1 get cancelled, and this is nothing but a square plus nd. So what is variance? Mean deviation. So mean deviation is given by x bar summation x bar minus xi upon total number of terms. So इससे मैं एक एक को सब्ट्रैक्ट करूँ, we will get a square plus nd minus a square plus a square plus nd minus a square minus d and so on up to a square plus nd minus a square minus 2nd. And note that these are mod values, magnitude only is considered here, divided by total number of values, that is up to here how many values are there, 2n plus 1. तो इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा, we will get 2 times of d outside a square plus plus 2a square. एक्चुअली a square तो कैंसिल हो जाएगा, a square कैंसिल, एन डी देन एन टी माइनस 1 एन टाइम्स डी टाइम्स एन माइनस 1. एंड सिमिलरली एक प्लस का सीरीज होगा, दूसरा माइनस का सीरीज होगा, इसलिए ये 2 बाहर आया है. एंड डी इज़ टेकन कॉमन फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल टर्म्स, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टाइम्स n divided by 2n plus 1. So it is 2d, इसका समेशन हो जाएगा n into n plus 1 by 2 and divided by 2n plus 1. So from here we get dn into n plus 1 divided by 2n plus 1. So this is the solution to this question. Number 8. So in question number 8, a tower is given. It is inclined to west direction. Let's say this is west direction. So tower ka inclination, let's say this is the inclination of the tower. This is the bottom point of tower. Let's say point A. It is given in the question. It is A. T point is B. And now A से एक point है C, which is 20 meter away from it. 20 meter. This is the tower. And angle of elevation from this point is 75 degree. Another point which is 20 meter further from C. Let's say it is D. And angle of elevation from this point is 45 degree. Let's name it point D and it is 45 degree. तो इससे मैंने vertical line draw किया perpendicular. Let's say it is X. It is also 20 meter. And this is let's say Y. तो ये एंगल 45 है, 75 है. This must be 45 plus 3 30. So this is 30 degree. So now these two angles, इस एंगल का सम. एंड क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो that this tower AB makes alpha angle with vertical. So this angle is basically alpha. Alpha निकालना है. Let's say it is beta. So what is alpha plus beta? Alpha plus beta is equal to 15 degree. Why 15 degree? Because ये 45 है. This has to be 45 since it is 90 degree in triangle AB, in triangle BPD. तो ये 15 degree हो जाएगा because complete angle is 45 degree. So alpha plus beta is 15 degree. So let's see in triangle BPD.
D. In triangle BPD we have tan alpha plus beta is equal to 20 plus x upon y. This plus this by this. Tan alpha plus beta is 15 degree. We can write 15 degree as 45 minus 30, which is equal to 20 plus x by y, and this becomes root 3 minus 1 upon root 3 plus 1, which is equal to 20 plus x upon y. On doing rationalization, we get 2 minus root 3 upon 1 is equal to 20 plus x by y. So इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 2y minus y root 3 is equal to 20 plus x. Let's see another equation here कि triangle, actually it was triangle BPC, ये triangle है BPD. In triangle BPD we can see that tan 45 degree is equal to y upon 40 plus x, or we can say 40 plus x is equal to y. We can find x is equal to y minus 40. Now see in this equation I दोनों साइड मैंने 20 ऐड कर दिया. So 20 plus 2y minus y root 3 is equal to 40 plus x, and 40 plus x is y only. तो अब इसे सॉल्व करूँगा, that will give us y root 3 को उधर ट्रांसपोज किया, this becomes minus y root 3 minus y, and this becomes 20. So y is equal to 20 upon root 3 minus 1. Now putting this value in this equation, we get x is equal to 20 upon root 3 minus 1 minus 40. So x becomes 60 minus 40 root 3 upon root 3 minus 1. We can write 20 3 minus 2 root 3 upon root 3 minus 1. Now basically we have to calculate tan alpha, this value. So tan alpha क्या हो जाएगा, उससे फिगर से tan alpha will be equal to x upon y. Now x is 20 times 3 minus 2 root 3 upon root 3 minus 1, and y is this value 20 into root 3 minus 1. So this get cancelled, and finally we get tan alpha as equal to 3 minus 2 root 3. So this is the solution of this question. That is why I told that today's paper is very calculative. Question number 9. The two curves are given x square y is equal to 1 and y equal to x square. इन दोनों का point of intersection क्या आ जाएगा? This will be x to the power of 4 is equal to 1. So x is equal to plus minus 1, and thus y is equal to 1. Now since the point lies on first quadrant, so point we consider 1 1. इस वाले का स्लोप क्या हो जाएगा? लेट्स से m1 क्या हो जाएगा, इज 2x इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0. सो वाई डैश इज इक्वल टू माइनस 2y अपॉन एक्स, एंड 1 1 पॉइंट पे हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 1 बाई 1, दैट इज़ 1. सो m1 इज इक्वल टू माइनस 2. सिमिलरली m2 इज इसका स्लोप, that is 2x, which is equal to 2. So tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 whole mod. m1 is minus 2, m2 is minus 2, minus of 2, and this becomes 1 minus 4, इसका whole mod. So we get 4 upon 3. So this is answer to this question. Question number 10, we have to solve this integral. So divide numerator and denominator by cos square x. So it becomes sec square x plus 3 tan square x dx, and this becomes sec square x. This becomes sec square x. ऐसे convert कर दिया tan square में, तो 1 plus 4 tan square x dx. Now let's say t is equal to 10x. So dt is equal to sec square x dx.
So this becomes dt upon 1 plus 2t का होल स्क्वायर. सो इससे इवेलुएट होकर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स t 1/2 plus c. That implies 1/2 tan inverse t is 10x. सॉरी ये 2t होगा, तो 2 10x plus c. Now comparing it with the given condition, we get fx is equal to 10x. So we have to find the value when the fundamental period of this function fx, which is equal to pi, because fundamental period of 10x is pi. So answer is pi, option B. Question number 11. So A, B and C are given. A, B and C, A, B, C and D are in GP, geometrical progression. So let's say A is equal to ABA, B is equal to AR, C is equal to AR square and D equal to AR cube. तो A plus D is given to be 112. So A plus D क्या हो जाएगा, A into 1 plus R cube, A is equal to 112. And similarly B plus C is given to be 48. So B plus C, that is AR into 1 plus R is equal to 48. Now let's divide this two. So on dividing what we get, इसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ 1 plus R into 1 plus R square minus R, A divided by A, R into 1 plus R. This is 112 upon 48. So this term get cancelled, A get cancelled. 1 plus R square minus R upon R is equal to, this is 8 6 times 8 1s are 8, 8 4s are 14, so 7/3. So इससे क्वाड्रेटिक बन जाएगा 3 plus 3R square minus 3R equal to 7R. So from here we get 3R square minus 10R plus 3 is equal to 0. So R comes out to be 1/3 and 3. Now there is given condition that A is less than B, less than C, less than D, और increasing order में है A, B, C, D. So our ratio should be greater than 1. So 3 will be our ratio. तो R equal to 3 and R equal to 3 अगर इसमें let's put in any of the equation इसमें put किया तो we get A equal to 4. इसमें put किया तो A equal to 4. So our first term is A equal to 4 and our common ratio is R equal to 3. So S 6 up to 6th term will be A into R to the power of 6 minus 1 upon R minus 1, which is equal to 4 into 3 का 3 पे power 6, that is 9 into 9 into 9, so 81 into 9, so 970, 72 minus 1 upon 3 minus 1 2, so it becomes 2 times of 7 28, so it is 1456. So this is the correct answer. Let's see question number 12. Question number 12 में differential equation is given. So let's bring sin square y in the side. So this becomes sin y e to the power of x dx minus e to the power of x cos y into dy and divided by sin square y is equal to dx. So this becomes sin y into e to the power of x dx minus e to the power of x cos y into dy. So this becomes e to the power of x upon sin x का differentiation, which is equal to dx. So on doing integration both sides, we get e to the power of x upon sin x is equal to x plus c, or we can say e to the power of x is equal to x plus c times sin x. So actually you should know to predict the which format it is going to be adjusted. So यहाँ पर e to the power of x upon sin x का whole differentiation था. So आपको देखकर समझ में आना चाहिए. It will come with experience of solving a lot of problems. So in question number 13, it's given that A, B and C are 3 unit vectors which are perpendicular to each other. So what is the value of this product? तो इसे solve करता हूँ. Let's multiply with 2a. 2a से सबको multiply किया. Now since 2a vector is perpendicular to the dot product है, तो a cross b. So a vector will be perpendicular to both a vector and b vector. तो इसका dot product क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. Similarly a with 5bc, it will be 10 times 2 into 5 10 a vector dot b cross c. Now a with c cross a से perpendicular हो जाएगा, so their dot will be 0.
plus 0. Now 3b, 3b से 3b will be perpendicular to a cross b, तो ये 0 हो जाएगा. 3b with this becomes 0 because b यहाँ पर है, so 0. 3b with this, तो 6 3 is 18. b vector dot c cross a प्लस 4c से इसको मल्टीप्लाई किया, 4c का डॉट इसके साथ, तो 4c डॉट a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, एंड 4c with this becomes 0, 4c with this becomes 0. Why? Because c vector is perpendicular to c cross a. This becomes 10 a b c का बॉक्स प्लस 18 b c a plus 4 into c a b. So this you can see that they are in the same cyclic order, a b c, b c a, c a b, so they can be added. So in subtraction 32 box a b c, since they are unit vectors and perpendicular to each other, so इसका जो result आएगा that will be 1. So answer to this question is 32. Question number 14. So इसमें a and b 3 into 3 दो matrices हैं, where a का एलिमेंट्स a i j से and b का एलिमेंट b i j से डिनोट किया गया है. सो इट इज़ एक कंडीशन दिया है कि b i j इज इक्वल टू a i j प्लस a j i बाई 2, एंड फर्दर a and b can take values from the set 0 1 2 and 3. Now it is also there is a condition that a should be equal to b. Then how many such matrices are possible to satisfy these two conditions? तो लेट्स से ए मैट्रिसेस है, इसका एलिमेंट a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, एंड इसको b से इक्वल होना है, दैट इज़ b11 b12 b13 b21 b22 b23 b31 b32 and b33. तो ये पॉसिबल कब है? when this is becomes possible only when aij is equal to bij. Let's say this is equation number 1. Now the given condition is say and is say, let's solve that one. It becomes 2bij is equal to aij plus aji. Now it is bij is equal to aij, so finally क्या हो जाएगा? This becomes aij is equal to aji. So this is the final condition after solving these two conditions. aij equal to aji, इसका मतलब क्या हो गया कि जो इस एलिमेंट्स के अबाउट है aij, ij and ji, this to be same, this to be same and this to be same. Now possibility देखते हैं, how many such possibilities are there. तो these are the diagonal elements. Diagonal elements can be filled. 4 एलिमेंट्स हैं, तो any of the 4 we can fill, any of the 4, here also any of the 4, here also any of the 4. now इसमें 2 और इसमें 1. नोट दैट इसमें जो भी एलिमेंट आएगा इसमें सेम एलिमेंट आएगा, इसमें भी, इसमें जो एलिमेंट आएगा यहाँ सेम एलिमेंट आएगा, इसमें जो एलिमेंट आएगा वो यहाँ आएगा. इसमें फिल करने का 4 पॉसिबिलिटी है, कोई भी 4 एलिमेंट ले सकते हैं, इसमें कोई भी 4, इसमें कोई भी 4. सो टोटल 4 into 4 into 4 into up to 4 multiplied by 6 times, that is 4 to the power of 6, or we can say 2 to the power of 12. So 2 to the power of 12 is the right answer to this question. Let's see question number 15. So they are given a line is passing through the point A 2, 3, 5 and it is parallel to the vector 2i cap minus j cap plus k cap. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा इस लाइन का? इक्वेशन ऑफ लाइन L1, लेट्स से it becomes x minus 2 upon 2 equal to y minus 3 upon minus 1 which is equal to z minus 5 upon 1. Now it is given that इस लाइन पे एक पॉइंट है P and P is at a distance and says that AP का जो लेंथ है that is 2√5. तो P पॉइंट इस लाइन पे will be let's say एक पैरामीटर लैम्डा. सो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 5. सो AP का डिस्टेंस क्या आ जाएगा? AP इज इक्वल टू अंडर रूट 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 दैट इज 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 3 माइनस 3, सो माइनस लैम्डा का स्क्वायर दैट इज लैम्डा स्क्वायर, दिस बिकम्स लैम्डा का स्क्वायर. सो इट इज़ √6 इंटू लैम्डा इंटू √6 एंड AP का जो लेंथ इट्स गिवन 2√6.
दैट इम्प्लाइज लेमडा इज इक्वल टू 2. सो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट पी क्या हो जाएगा, पॉइंट पी विल बी 6 minus 1 and 7. So option B is the correct answer. Question number 16. So PQ is the common chord of the circles S1 and S2. Then the perimeter of triangle C1 PQ, where C1 is the center of one of the circle. So let's say these two are the circles and this is the common chord. Name it as P and Q. ये center है, this is center of, let's say this is S1, this is S2. तो for S1 के लिए center क्या है, it is given by -1, -3/2, and for S2 के लिए center है -2, -3/2. So clearly this point is our C1 as mentioned in the question. ये C1 है, ये P है, and this is Q. तो we have to calculate the perimeter of this triangle. So ये इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस आ जाएगा R1 हो जाएगा 3/2. तो दिस इज़ 3/2, दिस इज़ 3/2 एंड वी कैन फाइंड, अच्छा पी क्यू का इक्वेशन पहले लिखते हैं. पी क्यू का इक्वेशन क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू S1 minus S2 which is equal to x square plus y square. They will get cancelled, so finally we will left with 2 minus 2x. Y term will cancel, -1 is equal to 0, so we get x is equal to -1/2. So perpendicular distance ये क्या आ जाएगा, this is 1/2, this is 1/2. तो ये distance क्या आ जाएगा, let's name it as m. तो pm is equal to under root 9/4 minus 1/4, that is 8/4. तो √2 आ गया. Therefore PQ is equal to 2√2. तो perimeter P is equal to 3/2 plus 3/2 plus 2√2. So we get 3 plus 2√2. Therefore option C is the correct answer. Sorry, option B is the correct option. Let's take question number 17. If the segment intercepted between the lines x plus 6y minus 13 equal to 0 and x minus y plus 3 equal to 0 is bisected at 6, 8, then the square of the length of the segment is. So let's say that these are the two lines. Let's say these are the two lines. This is x plus 6y minus 13 equal to 0, and this line is x minus y plus 3 is equal to 0. And let's say this is the intercepted portion between these two line and its midpoint is 6, 8. एक पैरामेट्रिक पॉइंट इसमें एज्यूम कर सकते हैं. लेट्स से दिस लाइन पे है h plus 3. x को h ले लिया तो y विल बी h plus 3. सिमिलरली इस पे एक पैरामेट्रिक पॉइंट लिया k and this becomes 13 minus 6k. Now just see that k plus h plus 3/2 is equal to 8. So this becomes k plus h plus 8 to the 16 minus 3, 13. Equation number 1. Similarly 13 minus 6k plus h by 2 should be equal to 6. So this becomes minus 6k plus h is equal to 12 minus 13, that is -1. This is equation number 2. So now we on solving these equations we get h is equal to 11 and k comes out to be 2. So this coordinates becomes 11, 14, and this one becomes 1, 2. So इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, let's say d is given by under root 100 plus 144, which is 244. Therefore d square is equal to 244. So this is the answer to this question. Next question number 19. A variable ellipse are drawn with x equal to -4 as directrix and the origin as the corresponding focus. The eccentricity of the locus of the extremities of the minor axis of this ellipse is. So let's understand it with a diagram. Let's say it is our ellipse. This is the center of the ellipse. This is the focus, and let's say this is the directrix of the ellipse.
So given directrix of the ellipse, इसका इक्वेशन है x इक्वल टू -4, और वी कैन सिंपली राइट -4, 0, एंड इसका जो फोकस है दैट इज़ 0, 0, एंड लेट्स से इसका सेंटर इज h, k. So we know that this distance is basically what, AE, and this distance is A by E. तो A by E बराबर क्या गया, 4. So A is equal to 4E, इक्वेशन नंबर 1. एंड H क्या हो जाएगा, H इज AE, बिकॉज दिस इज ऑरिजिन, तो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में आ जाएगा H इक्वल टू AE, एंड K इज इक्वल टू, ओके लेट्स से K एज इट इज. I cannot say it is -4, whether axis may not be x-axis or maybe, so we cannot comment on that. So it is, now we can say that A by E, ये जो डिस्टेंस है डायरेक्ट्रिक्स से इसका सेंटर का, दैट इज़ A by E. तो we can write that this distance minus this distance, और this distance, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस A by E है और ये डिस्टेंस AE है. तो इन दोनों का, और मुझे पता है कि 0, 0 से ये जो डायरेक्ट्रिक्स है दैट इज़ -4 पे है, ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका -4 पे है, तो ये डिस्टेंस 4 है. तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू राइट दैट A by E minus AE is equal to 4. Okay, so this gives us A times, or yes, A by E minus E square is equal to 4E. Multiply it with A, तो A square into 1 minus E square equal to 4AE, and this is our B square, ये B square होता है, which is equal to A is H, तो 4H, and B square क्या हो जाएगा, that is our K square, B square is our K square, which is equal to 4H. So therefore we get Y square is equal to 4X, and it is the equation of a parabola. Therefore इसका eccentricity क्या होगा, that eccentricity will be 1, equal to 1. Let's see question number 20. I would say that question number 20 is really very good problem, and I think this type of question should not be asked in JEE Mains. So let's see, let the locus of any point PZ in the Argand plane is argument of this equal to pi by 4. If O be the origin, then the value of maximum OP plus minimum OP by 2 is. So first we will find the locus of the point PZ. Since PZ P कोई पॉइंट है जिसका जो ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो PZ का मैं इसमें पहले इसको लोकस निकालता हूँ. सो आई एम यूजिंग अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व इट. लेट्स से Z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई. तो वी विल, इफ वी फोकस देन Z माइनस 5i, लेट्स सॉल्व हियर, Z माइनस 5i अपॉन Z प्लस 5i. दिस बिकम्स x plus I times y minus 5 upon x plus I times y plus 5. Now let's multiply by its conjugate. क्या हो जाएगा, x minus I times y plus 5 upon x minus I y plus 5. तो ये बन जाएगा this multiplication x square. This becomes minus iota x y plus 5. This is iota x y minus 5, and this becomes minus minus plus y square minus 25. This divided by, this is x square plus y plus 5 का whole square. So on solving we get x square plus y square minus 25, एंड इससे आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई गेट कैंसिल, सो माइनस 5 5 10 एक्स आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर. तो इसमें वी नो दैट आर्ग्यूमेंट इज बेसिकली व्हाट, इट इज़ द इमेजिनरी पार्ट, और वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट of z upon real part of z. So here tan theta is tan pi by 4. That implies tan pi by 4 equal to 1 should be equal to imaginary part, that is minus 10x, upon real part, that is x square plus y square minus 25. So we get x square plus y square minus 20 minus let's say plus 10x minus 25 is equal to 0.
तो बेसिकली व्हाट लोकस क्या हो गया z का, लोकस ऑफ z इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 इक्वल टू 0, यानी कि सर्कल विथ सेंटर -5, 0 एंड रेडियस इज 5√5 and radius being 5√5. So if we draw its diagram, then this is -5, let's say -5, 0 and एक circle होगा. This is our point 5 iota 0, 5 and this is minus 5 iota. Let's write iota only. So this is the required circle which will be the locus of this point P Z. So now इसको join किया मैंने. Since let's say point P Z यहाँ पर कोई है P Z, then this angle is 45 degree pi by 4. So this is 90 degree. This is 90 degree, and since it is 5√2, इसमें आया कितना था, that is 25 plus 25, so that is 5√2. It's 5√2. 5√2 इसका रेडियस है. This is 45, तो this distance will be 5. ऑफकोर्स है भी ये 0, 0 है. This is 5. नाउ अब मिनिमम डिस्टेंस से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा. पॉइंट पी जेड कैन बी मैक्सिमम डिस्टेंस इसका ओरिजिन से ये हो सकता है. लेट्स से दिस इज एम पॉइंट, तो एम ओ पॉइंट होगा पी ओ का. पी ओ का मैक्सिमम कब होगा, जब ये पी जेड यहाँ लाई करेगा, दैट विल बी पी एम, एंड विच इज़ वॉट, विच इज़ 5 + 5√2, 5 + 5√2. एंड पी ओ का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, पी ओ का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, पी ओ दैट इज़ पी जब मूव करता हुआ यहाँ आएगा, दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू. पी जेड इधर नहीं आ सकता है. पी जेड कैन लाई ओनली ऑन दिस डार्क पार्ट और दिस लाइन. इस शेडेड पार्ट में पी जेड नहीं आ सकता है. सो पी जेड कैन बी इन दिस, तो मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है. मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज द मिनिमम पॉसिबल. लेट्स नेम एट एल. दिस इज एक्चुअली ओ, तो विल बी इक्वल टू एल ओ विच इज़ इक्वल टू 5√2 का कॉस sin 45, so 5. Therefore the question में जो दिया है पी ओ मैक्स प्लस पी ओ मिनिमम बाय 2 is what, 10 + 5√2 divided by 2. So this is 5 + 5/√2. So this is the correct answer or the actual solution for this problem. Go through this solution once. Question number 21. So we have to find the number of solution of this equation in the range -2π से 2π with open bracket. तो let's solve it. दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 + 2 cos 10x cos 6x ये फॉर्मूलेट हो जाएगा. दिस विल बिकम cos 10 + 6 16x प्लस cos 10x - 6x दैट इज 4x इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 4 cos स्क्वायर 8x प्लस 2 sin स्क्वायर 8x. So this becomes 2 + cos 16x plus cos 4x, cos 4x plus 4 cos square 8x plus 2 sin square 8x. We can write it as 1 minus cos 16x. So this becomes 1 plus 2 times cos 16x plus cos 4x equal to 4 cos square 8x can be written as, we can take 2 into 2 cos square 8x, that is cos 2 16x plus 1, and which becomes 1 plus 2 cos 16x plus cos 4x is equal to 2 cos 16x plus 2. So this becomes cancelled. So cos 4x is equal to 1.
सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन, रिड्यूस फॉर्म है। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, 4x शुड बी इक्वल टू 2n पाई, दैट इम्प्लाइज x शुड बी इक्वल टू n पाई बाई 2। तो पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या आ जाएंगे, x शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2 होना चाहिए, प्लस माइनस पाई बाई 2। इसमें n इज इंटीजर, तो 1 रखा तो प्लस माइनस पाई बाई 2 आ गया। देन x कैन बी प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, then x can be plus minus pi also, putting 2, and x can be 0 also. So total number of such solutions are 7. So 7 is the answer to this question. So question number 22 is given as shown in the expression. So इसमें minimum value of x find करना है, maximum value of x find करना है। तो इस क्वेश्चन को मैंने क्वाड्रेटिक के तरह ट्रीट किया। सो वी गेट इट्स सॉल्यूशन एज साइन इनवर्स x minus 1 into sine inverse x plus 2, and this box represents greatest integer function, that is box function or GIF function. So this implies that sine inverse x क्या होगा, sine inverse x का box function क्या होगा, this will lie in the interval -2 से 1. that implies what, sine inverse क्या हो जाएगा, sine inverse x should belong to -2 तो एज इट इज़, लेकिन अगर साइन इनवर्स x 1 है तो 1 किस किस केस में पॉसिबल है, जब साइन इनवर्स x अगर 2 से 2 तक भी है, यानी 2 को एक्सक्लूड करके 2 से स्लाइटली छोटा भी है, देन ऑल्सो इट्स वैल्यू विल बी 1। तो ये एक्सेप्ट 2 और वेरी क्लोज टू 2 भी ले लिया तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। सो साइन इनवर्स x का वैल्यू ये आएगा। बट वी नो दैट साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स का रेंज होता है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, टेकिंग साइन इनवर्स x इन बिटवीन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, तो कोई चेंज नहीं आएगा। सो इट विल बी 1 से लेके -1 से लेके 1। सो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, तो x max इज इक्वल टू 1। So this is the solution for question number 22. Question number 23, basically we have this integral, where to solve it. So let's put x is equal to 10 to the power of 4, sorry, t to the power of 4. So this is dx into 4 times t cube dt, और इसका लिमिट कैसे चेंज होगा, इसका लिमिट चेंज हो जाएगा 0 0 एज इट इज़, एंड t to the power of 4 है तो ये बन गया 2, दिस बिकम्स t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड dx इज़ 4t क्यूब, सो ये 4t क्यूब 4t to the power of 4 हो गया इंटू dt। इसमें मैंने 4 कॉमन ले लिया, लेट से 4 आउट किया, 0 to 2 t to the power of 4 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, इससे +1 एंड -1 इन नोमरेटर। सो वी गेट 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 2 t to the power of 4 -1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, प्लस 4 इंटू 0 to 2 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। सो दिस बिकम्स 4 टाइम्स 1 प्लस 1 माइनस, और सिंपली टी स्क्वायर माइनस 1 to the t square minus 1 dt, integration 0 to 2, plus it is 4 times tan inverse t from 0 to 2. This becomes t cube by 3 minus t 0 to 2 plus 4 tan inverse t is 4 tan inverse 2. This becomes 4 times 8 by 3 minus 2 plus 4 tan inverse 2, 3 to 6, that is 2 by 3 or 8 by 3 plus 4 times tan inverse 2. So on comparing we get k is equal to 8 by 3 and m is equal to 2. So basically we have to find 3k minus m. 3k is 8 minus m is 2. So answer is 6. Question number 24. So there is given, there are 2 red balls, 3 blue balls, 4 white and k green balls.
if socks are taken at random from the, so it's these are socks at random from the drawer without replacement, then the probability that all the same color is 1/5, then k is equal to, ओके तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा कि सेम कलर का दो सॉक्स ली एंड बोथ आर ऑफ सेम कलर, तो इफ इट इज़ रेड देन इसका चांस क्या होगा 2 कंप्लीट इज 3 to 5 + 4 9 + k 9 + k। फिर सेकेंड रो में एक रेड बचा तो 1/8 + k। सिमिलरली इसके लिए हो जाएगा 3 ब्लैक है तो 3/9 + k। सेकेंड ड्रॉ में 2 ब्लैक बचा एंड टोटल 8 + k बचा। सो नेक्स्ट विल बी 4/9 + k into 3/8 + k। नेक्स्ट k/9 + k into k - 1/8 + k। So let's add, we get 9 + k into 8 + k 1/5. This is 2, 3 2 is 6, 2 + 6 + 12 + k square minus k। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 9 8 72 + 9k + 8k 17k + k square, and in this side 20 into 500 plus 5k square minus 5k, so you get 4k square minus 22k minus 28 plus 28, that is 2k square minus 11k plus 14. So on solving we get 2k minus 4k minus 7k plus 14. So from here we get k is equal to 2. So k is equal to 2 is the right answer of this question. Question number 25 says that a circle is drawn whose center is on the x-axis and it touches the y-axis. If no part of the circle lies outside the parabola y square equal to 8x, then the maximum possible radius of the circle is. So let's draw its diagram first. This is the coordinate axis. This is the parabola y square equal to 8x, and let's say this is the circle. This is the center of the circle. Y square equal to 8x. Let's say this point is r, 0. तो सर्कल का इक्वेशन क्या आ जाएगा, x - r होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, एंड वी हैव y स्क्वायर इक्वल टू 8x. लेट्स सॉल्व देम टुगेदर. प्लस 8x इज इक्वल टू r स्क्वायर, वी गेट x स्क्वायर minus 2rx plus 8x plus r square and r square get cancelled, so it becomes 0. So from here x into x minus 2r plus 8 is equal to 0. That is x equal to 0 or x equal to 2r minus 8. Now from here we see that the maximum value of r can be put to make x equal to 0. x को 0 बनाने के लिए we can put maximum value of r equal to 4. Therefore r जो maximum हो जाएगा रेडियस, maximum value of radius will be 4 units. So इसमें अगर r का वैल्यू 4 से ज़्यादा ले लें तो x will be पॉजिटिव होगा, यानी कि तो x के उस वैल्यू के लिए जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आएगा दैट विल बी आउटसाइड ऑफ द पैराबोला, एंड फॉर x इक्वल टू r इक्वल टू 4 ये 0 आएगा, द पॉइंट विल बी दिस वन, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0. लेकिन अगर x इक्वल टू 4 से अगर छोटा लिया दैन पॉइंट विल बी इनसाइड दिस पैराबोला, सो वेयर द सर्कल कैन एग्जिस्ट. बट अगर x पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर दैन 0 हो गया, then the point will be outside the parabola and circle has to cut the parabola at different points. So this, which is not possible as the questions condition of the question suggests. So r max is equal to 4. Hope the idea is clear to you. So this was the last question. Thank you for watching.